मूर्ख लोकी वंडियां पांदे, कुदरत कदे न वंडी जाए। জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, উথলি উঠেছে বাড়ি, প্রাণের আবেগ, প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখতে নারী। जलती ज्वाला उठते शोले, जाने कैसी अग्नि बरसती, लाल हो चला आज आसमां, किसे सुनाऊं आज दास्तां। The Partition of 1947, the single most defining event in the history of the Indian subcontinent. The memories which leave survivors teary-eyed to this day. Communal violence, bloodshed, abductions, rapes, suicides and looting. The horrors of partition are far from forgotten. In today's show, we'll get you the voices of people who have witnessed the deadliest bloodshed in Indian history as children. But did it all begin in 1947? Not exactly. Incited by the British divide and rule policy, communal hostilities had been escalating in British India. The Calcutta riots of 1946, also known as the Great Calcutta Killing, were 4 days of massive Hindu-Muslim riots in the capital of Bengal, India. It left an estimated 5,000 dead. On February 20th, 1947, Clement Attlee, the then British Prime Minister, declared that Britain would quit India in June 1948. To handle the exit, the new Viceroy arrived in Delhi on March 1947. Lord Louis Mountbatten, the last Viceroy of British India. His task was to prepare a plan for the transfer of power and to expedite the process of British withdrawal. Initially, he was given time until June 1948, not 1947, to complete his mission. But he was in a hurry to get back to Britain. On June 3rd, 1947, he announced his new plan. The date of transfer of power was changed from June 1948 to August 15th, 1947. This had disastrous consequences. The subcontinent was partitioned into 2 independent nation states, Hindu-majority India and the Muslim-majority Pakistan. English barrister Sir Cyril Radcliffe was given the task of drawing the boundary. It is interesting to note that Radcliffe had never visited the country prior to this visit. He had 5 weeks to divide the then British colony into the new independent nations. The fate of millions of people was sealed, and a humanitarian crisis unfolded. The new borders, which split the key provinces of the Punjab and Bengal in 2, were officially approved on August 17, 1947. This was the beginning of the greatest migration in human history. Muslims left for West Pakistan and East Pakistan, where millions of Hindus and Sikhs headed in the opposite direction. Nearly 15 million people were displaced. Approximately 1 million were killed. Around 83,000 girls and women were raped or abducted. And then there was those who survived. Bhagwan Das Taneja was born on October 3, 1939, in Kaluchi, a city in the Dari Ismail Khan districts of the Khyber Pakhtunkhwa province. Taneja grew up in a close-knit family of 5. He says his neighborhood, Hindus like himself, Muslims and Sikhs, lived in harmony until July 1947. He was 8 years old when things changed, seemingly overnight. Rioters from outside the city attacked residents, looted their houses, and set ablaze places of worship. The terrified Taneja family decided to migrate to India. पार्टीशन से पहले मतलब समझो कि 1 हफ्ता पहले यूँ समझ लो कि वहाँ बलवे शुरू हो गया, आपस में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा शुरू हो गया। पहले कभी नहीं होता था,
बड़ा पीसफुली हम लोग रहते थे दोनों कम्युनिटीज़। पता नहीं क्या हुआ, बाहर के कोई लोगों ने आगे शरारत की या जो भी है, या किसी पॉलिटिकल कोई होगा, तो उसकी वजह से मतलब बलवा शुरू हो गया। आगजनी भी हुई और फायरिंग भी हुई, लोग मरे भी सही। तो हम लोग, हमारे एक मुसलमान होते थे हमारे पड़ोसी, तो उनके घर में हम 3 दिन रहे और उसके बाद हम थाने में चले गए। मतलब वो एक नदीनाथ नाम का एक थानेदार था, उन्होंने सब हिंदुओं को थाने में बुला लिया जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद हम DI खां आए अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ आर्मी। फिर हम वहाँ से दरिया खान से ट्रेन में आए, फिर हम हरिद्वार। They reached Haridwar in August 14th, 1947 by rail. His family was among the fortunate ones. हमारी जो ट्रेन आई ना वो तो सेफ आ गई, लेकिन हमारे बाद की जो ट्रेन थी उसमें बड़ा मार काट बड़ी हुई, कट के आए लोग। मतलब लाहौर से जो अमृतसर आई है तो वो कट के आए हैं लोग बहुत। हम 14 अगस्त की शाम को हरिद्वार की पौड़ी पे पहुंच गए थे, वहीं 3 दिन रहे हम। उसके बाद हमें शेल्टर मिली वहाँ आर्मी कैंप में। हमें वहाँ बैरकें थी, आर्मी बैरकें इन द फुट हिल ऑफ हिमालयाज़। वहाँ हमें शेल्टर मिला, वहाँ गवर्नमेंट ने राशन भी दिया, लेकिन हम 2-4 महीने वहाँ रहे। उसके बाद हम शिफ्ट कर गए जवालापुर, हरिद्वार। They arrived in India on the eve of independence, but the sorrow of leaving their home overshadowed the joy of attaining independence. सुबह जब उठे 15 अगस्त को ना, सुबह तो यंगस्टर जो थे वो नाच रहे थे, देवर डांसिंग, इतनी खुशी मना रहे थे, स्लोगन रेज कर रहे थे, गई गुलामी आई आज़ादी, गई गुलामी आई आज़ादी, इस तरह के नारे लगा रहे थे लोग। खैर मैं तो छोटा था, मैं तो पता नहीं थी खास भाई क्या हुआ कैसे हुआ। मेरा ये हुआ कि मतलब पाकिस्तान छोड़ के हम यहाँ आ गए। As refugees in India, the family was allotted a house in Lajpat Nagar in free India's capital, Delhi. जब हम आए तो ये जो सड़क थी सामने वाली, ये बन रही थी, कुछ भी नहीं था बिल्कुल। और ये सामने वाला ब्लॉक जो है यहाँ खेती हुआ करती थी। हमारा जो था बिल्कुल लास्ट घर था। But the struggle of finding a living was real, including for the then 8-year-old child. यहाँ पर हम आए तो यहाँ दिल्ली में जब आए तो तकरीबन पेनीलेस थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ कमाना पड़ता था, भले मतलब रात की रोटी के लिए दिन भर कमाना पड़ता था। चाहे मेरी मदर थी, चाहे मेरे फादर थे, चाहे मैं था, जो भी। हमने बड़ी स्ट्रगल की, कुछ खाने को नहीं था, कुछ नहीं था। और ये जो छतें थी हमारी इतनी गर्म होती थी, ऐसा लगता था जैसे तंदूर में बैठे हुए हैं। कुछ था ही नहीं, कोई फैसिलिटी थी नहीं बिल्कुल। Growing up, Taneja excelled in maths. He went on to become a store owner just like his father. He married Pushpa and together they had 4 beautiful children, but he still yearns for the good old days on the other side of the border. हम लोग पहले होता था, जो मोहल्ला होता था ना, वो एक परिवार होता था। हम लोग आपस में खेलते थे, हंसते थे, बैठते थे, इकट्ठे खा लेते थे। आजकल वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। सब फ्लैटों में रहते हैं, किसी का कोई नहीं, किसी को कोई जानता ही नहीं है, कोई फ्रेंडशिप है ही नहीं। ये जो है ना, वो ये फ़र्क बहुत पाया मैंने। Having witnessed both the Indian-Pakistan partition and the 1984 riots, Taneja says his definition of religion has changed over the years. आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए। रिलीजन जो है ना, वो तो झगड़े ही पैदा करते हैं। हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, मुसलमान सिख से लड़ेगा, वो ईसाई से लड़ेगा, कोई जैन से लड़ेगा, ये क्या बात है। But according to him, the world appears to have learnt little from partition. दुनिया सीख के राजी नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ जो स्लोगन है ना संस्कृत में कि वसुदेव कुटुंबकम, अगर उसको फॉलो करें तो कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ, कुछ भी खून खराबा होगा नहीं।
While statistics give us some idea of the scale of migration that took place, it does not reveal the deeply emotional effects the partition had on real people, particularly women. But partition, like other conflicts and wars, affected women differently. A lot has been written about the women being raped, kidnapped, murdered, and sexually assaulted during and after partition. However, it is limiting only to discuss women as victims of sexual violence. It is critical to acknowledge stories of how it affected them in other ways. Meet Ila Banerjee, a great-grandmother, a foodie, a woman full of life, and a partition survivor. Born in 1936 in Mymensingh, in the eastern side of British India, Ila lived an ordinary life and attended school in the district till 1950. ईस्ट पाकिस्तान में मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। हमारा फादर उधर का कॉलेज का प्रोफेसर था, तो हमारा बचपन उधर ही बीता है। और हम लोग जैसे ऑर्डिनरी चिल्ड्रन जाते थे ना, स्कूल जाते थे, खेलते थे, ऐसे ही थे। But her life took a 360-degree turn in 1950 when the riots erupted in her district. The only option to live was to move to India. 50s का शुरू में फिर थोड़ा टेंशन हुआ, फिर थोड़ा सा इंसिडेंट भी इधर उधर। खास हम तो कुछ नहीं देखा, आवाज़ सुना है रात को, अल्लाह अकबर, ये वो जो भी होता है। तो फिर फायर इधर लग गया, उधर लग गया, ये सुना। रात का बिताना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुबह कब होगा। और हमारा जो फीलिंग ये था, उफ, इंडिया जाने से जैसे हमारा जान बच जाएगा। Within days, the family decided to move to Jamshedpur, India, to a relative's house. But in the midst of this, Ila lost her father. He had gone to Calcutta to arrange his family's migration. हमारा फादर ने एक जॉब का लिए अप्लाई किया कलकत्ता में, तो कॉलेज में मिल भी गया। तो वो फाइनलाइज करने के लिए वो कलकत्ता आ गया। तो 4-5 फ्रेंड मिल के, क्योंकि सबको ही था ना नया जगह, क्या करेंगे। ऑफ कोर्स हमारा फादर तो कलकत्ता से पढ़ा हुआ है, उसी कॉलेज में ही उनका नौकरी तो हो गया था। लेकिन वो लोग उसी टाइम में रिलेशन का घर में ठहरने का कोई सवाल ही नहीं है, तो होटल में ही ठहरे थे। लेकिन ये जो टेंशन, ये वो, फिर पहले रात को नींद नहीं है, ये है, उसी से सडन हार्ट अटैक से हमारा फादर वही होटल में ही दरवाजा बंद अंदर हो गया, खत्म। Her mother did not change the plan made by her late husband, and 14-year-old Ila, along with her sister and her newborn, left for Jamshedpur via air. हाँ, वो तो 45 मिनट्स का है ना। और बस उसी टाइम में ऐसी प्लेन नहीं था, वो तो ऐसी। और प्लेन में बैठने से एक ऐसी लिफाफा देते थे ब्राउन पेपर के, उल्टी करने के लिए। तो मैंने तो वो और मुझे ऐसी पेट्रोल का स्मेल से और ऐसी होने से ना हमारा उल्टी आता है। तो मैं तो ये लेके बैठी थी और ऐसी करके और सोचती थी जितना गुड थॉट वो लाने को कोशिश करती थी। Ila, along with her siblings, continued their education in India, but there were some initial challenges. तो स्कूल में जब मैंने इधर आके भर्ती हुआ, तब मैं तो बात ही नहीं करती थी, कि जब बात करने से ही लगता है जो कोई कहेगा ये तो उधर से आया, रिफ्यूजी है। 84 years old now, Ila lives with her daughter, Runa Mukherjee, in Delhi. My mother is the person with the least material expectations in life. She is happy and satisfied with very little, and she can adapt to any kind of circumstances. She can live in one room or she can live in a palace, and it makes no difference to her whatsoever. Soon after her marriage, Ila returned to Bangladesh with her husband. It was a bittersweet experience, one that she does not want to repeat again. मेरी शादी हुआ पहले 6 महीने मैंने गया ही नहीं ढाका सुन के ही हमारा चक्कर आता था।
तो फिर मैंने गया। अभी हमारा बेटा कहता है मम्मी जाओगे तुम्हारा देखने के लिए, मैंने कहा माफ़ करो हम नहीं जा। This is Pritam Singh. Once a Jammu Kashmir resident, Pritam now lives in Kathmandu, Nepal. He was 12 years old when British India was divided in two. 1947 में जब हिंदुस्तान में पार्टीशन हुई तो उस वक्त क्या हुआ कि पंजाब और जितने भी बाकी इलाके थे तो पार्टीशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि लाखों आदमी पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान के, तो हज़ारों आदमी मारे गए। बहुत लंबा चौड़ा मतलब बहुत खून खराबा, इतना बड़ा खून खराबा शायद ही हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। In 1947, when the partition happened, the princely state of Jammu Kashmir was neither part of India nor part of the newly formed Pakistan. Maharaja Hari Singh of Jammu Kashmir, along with his Prime Minister Ramachandra, decided not to accede to either dominion. But everything changed in 1948. लेकिन 1948 में क्या हुआ कि एकदम पाकिस्तान ने ये जो कबाइलीज़ हैं, पठान जिनको कहते हैं, उनके थ्रू से इन्होंने मतलब उनको पूरा आर्म एमिनेशन और ट्रेनिंग दे के तो उन्होंने कश्मीर पे हमला करवा दिया। और हमला करते उस वक्त जो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे उनके पास तो कोई इतनी लंबी चौड़ी फ़ौज नहीं थी कि वो इतने बड़े पाकिस्तान की फ़ौज थी, उनके पास पूरा मतलब आर्म एमिनेशन हर चीज़ थी, तो रोक नहीं सकते थे उनको। तो जब वो काफ़ी कबाली करते आते आते आलमोस्ट कश्मीर एयरपोर्ट तक पहुंच गए। जब ये बात हुई तो पंडित नेहरू जी थे, तो उन्होंने उस वक्त इमीडिएटली जो था फ़ौज जो थी वो इंडियन आर्मी को मतलब कश्मीर भिजवाया बाई एयर। तो आते ही जो आलमोस्ट जो पठान लोग जो थे जो आलमोस्ट एयरपोर्ट के नज़दीक में पहुंच गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मतलब है कि कुछ लोग तो इवन जब वो आर्मी गई और वो पैराशूट से नीचे उतर रहे थे तो बहुत से लोग तो पठानों ने वहीं मार दिए। लेकिन बहुत सी आर्मी जो है कि किसी तरीके से वो मतलब है कि उतर गई, ज़मीन पे उतर गई, और उसके बाद फिर उन्होंने मोर्चेबंदी करके तो ऐसा मतलब है कि ज़बरदस्त अटैक किया इन लोगों पर। This was the start of the first Indo-Pakistani war. To escape the conflict, many civilians vacated their villages. Pritam Singh says his father helped the Indian Army in providing food and shelter for those in need. जम्मू में क्या था कि मेरे फादर तो पहले जम्मू में थे क्योंकि ये बात ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जब अपने बरादरी भाईचारे के लोग थे सारे आलमोस्ट, तो उन लोगों के लिए मतलब है कि वहाँ पर उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वहाँ कैंप वगैरह बनवाए और लगाने के बाद इन लोगों को ला के उन कैंपों में रख के राशन वगैरह जो था उनको वहाँ दिया गया। After the war subsided, his family migrated to Nepal, where they have been living for over 6 decades. But he continues to visit his ancestral home in Jammu. जम्मू कश्मीर में बहुत ना अफड़ा तफड़ी का माहौल, आर्मी का रोज पाकिस्तान का, कभी इधर से हमला हो जाए, कभी उधर मारे लोग, आदमी मारे जाएं। तो मेरे फादर कहने लगे कि इससे अच्छा है कि हम लोग कहीं इंडिया में कहीं बाहर बिजनेस कर लें। तो मैं बात ढूंढते मतलब है कि नेपाल आ गया, और नेपाल में आज मेरे ऑलमोस्ट 62 साल होने लगे नेपाल आए। मैं 3 ट्रक लेके यहाँ आया था, लेकिन आई रियली एंजॉयड में यहाँ आके बहुत मतलब सुखी रहे, और मतलब काफ़ी बिजनेस वगैरह भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, और तब से मैं यहीं हूँ। Nearly 90, Pritam Singh is enjoying his second innings in life. Reflecting on the tumultuous period of the 1940s, he says he still wishes the lines were never drawn. Meet Pratap Kumar Hora. He migrated from Pakistan to India. Born in 1937 in Kasur, a region south of Lahore, in the Pakistani province of Punjab, Pratap was the youngest of 6 siblings.
His father, Nand Gopal Hora, was a successful lawyer, while his mother, Rani Bai Hora, whom he lost at a very young age, was a freedom fighter. My father was a leading lawyer at Kasur, and we had our own house, which was almost three-story house. I was unlucky that my mother died when I was almost 3.5 years old. Their lives changed in 1947. His older sisters, who were studying in a boarding school in Lahore, were asked to go home. Their hostel had been attacked by rioters. My sisters were studying at Lahore, and just end of July, that hostel was cordoned off by bad elements, say rioters, and it was planning of those rioters to abduct the girls. Military police intervened and facilitated the girls to go along to their parents, with their parents, to their houses. Pratap's father decided to send his children to a relative's home in Banaras. On August 6th, the siblings caught a train to India. To be on the safer side, let myself and my two sisters go to Banaras to our uncle. So he sent us to Banaras on 6th of August with my other uncle. The following week, their father, on the advice of his Muslim accountant, left his home in Kashmir, never to return. 14th day, his assistant, main assistant, which is called Munshi, came to him and informed him that Muslims from Lahore have come and planned that they will attack Hindu homes on 14th night. They will loot and murder the occupants. So please you leave, otherwise I will not be able to save you. So it was hardly 200 meters station from our house, so he took a train for Amritsar. With the help of their extended family, the Hora family relocated to Bulandshahr, a city in Uttar Pradesh. Suddenly, they had become refugees. When my father settled down at Bulandshahr, and the whole family went there to live there, so it was a big contrast to what we were used to at Kasur. We had a very big koti which had space for cows and their storage house for their fodder. And this was small rooms, 4 in a line. Bathroom did not have a door, so we put a curtain. Whoever goes has to, but we had to adjust what to do. His wife, Lata Hora, says she treasures the family heirloom carried across the border during partition. उन्होंने बताया अपना कि भाई हम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से निकले हैं और मैं इस तरह से एक दिन पहले ही भागकर वहाँ से आया जब ये बन गया, तो मैं और कुछ भी नहीं उठा सका। ये बालियाँ मुझे तुम्हारी सास पहनती थी, तो वो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जब उनकी डेथ हुई तो मैंने ये संभाल के रख ली थी। तो जब मैं वहाँ से भागने लगा तो मुझे याद आया, अरे वो बालियाँ रह गईं। तो मैंने भाग के जल्दी से वहाँ से वो बालियाँ निकाली और अपनी जेब में रख के भागा। Their fight for survival in India was real, but the family never quit. Slowly, they managed to get back on their feet, going from strength to strength.
I've struggled, yes, struggled, and with the grace of God, come out successful. This is Mansoor Alam. He was a child when his family migrated to East Pakistan. 47 का जो हुआ उसमें हम लोग बहुत तकलीफ किया एक बेला खाते थे 2 बेला भूखा रहते खाना नहीं कुछ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है. Now in his 80s, Alam believes the partition shattered the dreams he had for his future. और मेरा सपना क्या रहेगा बॉयज खत्म सपनों से और मेरा सपना करके क्या करें. 7.5 decades have passed. Perhaps the wounds of those who lived through it will never fully heal. This is the lasting legacy of partition